So now I will talk about charge on the nucleus and the idea of neutron. Clear? This is again very interesting. Now again come to the Chadwick, 1920. What it did, he used Rutherford's theory of alpha particles So he used the theory of alpha particle scattering to measure the charge on the nucleus. और चार्ज कितना होता है? प्लस जेड इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. How much is the charge? It's a mathematical calculation. न्यूक्लियर फिजिक्स की बुक्स में आपको ये मिल जाएगी कैलकुलेशन, राइट? सो ऑन द न्यूक्लियस एंड द चार्ज शुड बी दिस वन. और कौन से एलिमेंट्स के लिए स्टडी किया? ही स्टडीड इट फॉर कॉपर, सिल्वर एंड प्लेटिनम. इनके लिए स्टडी किया गया. ठीक है, he did some experiment, did little calculation, and on the basis of that he tried to find out the charge on the nucleus. एलिमेंट कौन कौन से थे? ये 3 एलिमेंट्स थे, कॉपर. चलो, और यहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, बिकॉज एटॉमिक नंबर टेल्स अस अबाउट द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. एंड चार्ज जेट, इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. सो एलिमेंट कौन से थे? वन इज द कॉपर, अनदर इज द एल्यूमिनियम एंड इट इज द प्लैटिनम. कॉपर के ऊपर कितना था? 29 एटॉमिक नंबर होता है. इट इज ये वो वैल्यू जो हमें आज पता है, राइट? एंड 78 इज ऑन द प्लैटिनम. अब चैडविक ने क्या फाइंड आउट किया? इट इज द 29.3 प्लस माइनस 0.5. It is 46.5 plus minus 0.7. ये एरर है. एंड देन इट इज 77.4 प्लस माइनस 1. सो ये वैल्यूज जो थी वो चैडविक ने मेजर की, राइट? दिस इज द वन थिंग. और अभी तक हमें एक और चीज पता थी कि जो एटम है ये किस चीज से बना हुआ है. Till now we know that because we have discovered only electrons and protons. सिर्फ 2 चीज़ों का पता था. So that means जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होने चाहिए, because it explains the neutrality of the atom. It explains the neutrality of the atom. So that means Z number of electrons should be there and Z number of protons should be there. And it explains the neutrality. So that means होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए था? So that means mass of the atom किसके इक्वल होना चाहिए? It should be equal to the mass of all the electron and mass of all the protons. But this doesn't happen. This is not true. This is not possible. It is always heavier than their individual sum. Sorry, collective sum. One thing. For example,
और दूसरी चीज जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, दैट इज ऑफ नो, बिकॉज उसको मैं काउंट करूं या ना करूं, बिकॉज दैट्स वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू मास ऑफ द प्रोटॉन. कैसे? लेट अस हैव ए लुक एट द न्यूमेरिकल वैल्यूज. सो mass of electron is what? Is 9.10939 into 10 raised to power minus 31 kg. Mass of proton is what? It is the 1.67262 into 10 raised to power minus 27 kg. So if I take the ratio mass of proton to the mass of electron, then it is 1836.15. ये मेरे पास वैल्यू आ रही है. So that means 1836 times proton heavier है. Suppose करो मेरे पास 1 kg शुगर है, 1 kg शुगर है एंड 1836 या रफली मैं अगर बात करूं 1800 kg का कोई और मटेरियल है, मींस 1800 kg मींस मान लो शुगर की एक क्विंटल की कितनी बोरियां हैं? 18. नाउ सी द डिफरेंस. सो दैट मीन्स 1 kg का कोई मीनिंग नहीं है उस टाइम. सो दैट मीन्स दिस कैन बी इग्नोर्ड. सो दैट मीन्स mass of the atom mainly because of the mass of the proton. नंबर 1 इसके इक्वल होना चाहिए. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं. अब अगर देखा जाए यहाँ पे क्रिटिकली तो मास तो हमारे पास ज्यादा आ रहा था एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के केस में क्या था? हाइड्रोजन एटम का मास नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन न्यूक्लियस के बराबर था. बट अगर मैं हीलियम की बात करूं, इवन ड्यूटेरियम की बात करूं, और भी काफी सारे एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, उनके एटम्स की बात करूं, उनका मास हमेशा ज्यादा आ रहा था उनके प्रोटॉन्स के मास के कंपैरिजन में. सो व्हाट वाज द रीजन? क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सो व्हाट पीपल सजेस्टेड, बिकॉज वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन. सो व्हाट दे सजेस्टेड इन 1920, Rutherford suggested that nucleus consisted of positive proton and neutrally charged particle. और what is it neutrally charged particle? What they assumed? He assumed that proton and electron are bound in some way. This was the model which was suggested by Rutherford. So suppose मेरे पास हीलियम न्यूक्लियस है. हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं. 2 प्रोटॉन तो हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज थे, बट साथ में बिकॉज इसका मास नंबर कितना है हीलियम का? हीलियम का मास नंबर है 4. ये एज्यूम किया गया, मास नंबर 4 था. अब मुझे एटम की न्यूट्रलिटी भी एक्सप्लेन करनी है, मास नंबर भी एक्सप्लेन करना था. So what he assumed that proton and the electron are clubbed together in some way. He doesn't know that how they are bound together, but they are sitting in this way. So it will explain each and everything. So ये क्या है? It is basically electron proton composite. Electron proton composite.
Then American chemist, an American chemist W.D. Harkins first named this is a hypothetical particle, as neutron. He called it as neutron. So that means the idea of neutron was given in 1920. It was given in 1920. But there is a problem with it. Means American chemist Harkins suggested that there is some hypothetical particle that is neutral. And Rutherford assumed that it is a combination of a proton and the electron. Right? So that means what this model suggests that electron also reside inside the nucleus. They also reside inside the nucleus. This is the one thing. How people assumed it? Because of beta radiation. Radioactivity में हम क्या देख रहे थे? We are observing that beta radiations are coming out of what? Coming out of the nucleus. And these beta radiations are what? These beta radiations are nothing but these are the electrons. So that's why people have assumed it. So that means nucleus consists of what? Nucleus consists of protons and nuclear इलेक्ट्रॉन्स, इनसे मिलके बना हुआ न्यूक्लियस. बट दिस मॉडल इज डिस्कार्डेड. So that means proton electron model of nucleus was discarded. It cannot be accepted. Q. Because according to Heisenberg uncertainty principle, why we have discarded? Because according to और भी 2-3 रीजंस थे, मैं सिर्फ एक ही रीजन की बात कर रहा हूं यहां पे. अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस. इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको क्वांटम मैकेनिक्स में मिल जाएगी. यू शुड गो थ्रू दैट. कैन नॉट रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस. So this model was discarded. Then in 1931, ग्यारह साल बाद दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया. ठीक है, इसी के ऊपर. सो इन 1931 Walter Bothe and Herbert Becker, they have taken alpha particle and
he bombarded beryllium, boron and lithium with the alpha particle. And what he observed? He observed that some penetrating radiations are emerged out. Radiations were emerged out or were produced. And another thing, so that means alpha particle when bombarded over the beryllium, boron और the lithium different इनके ऊपर substances के ऊपर throw किया और वहाँ से एक radiation emit हुई. And these radiations not affected by electric field. Are not affected by electric field. So that means if some particle is not affected by the electric field, that means it is a neutral particle or maybe gamma radiation. And इन्होंने क्या assume किया? They assumed it as gamma radiation. Gamma radiation assume कर लिया, but there are some people which are not convinced by this. Means Rutherford Chadwick not convinced by gamma ray, not convinced by gamma ray interpretation. Then Chadwick again performed the experiments. Series of experiments, and he used paraffin wax. किसका यूज किया? Paraffin wax. Paraffin was used, and what he concluded? He concluded that this new radiation consisted of uncharged particle. और ये 1932 में किया था चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट. अनचार्ज्ड पार्टिकल विद मास nearly to that of proton. So that means now a new particle, neutral particle has been detected and whose mass is nearly to that of proton. तो hypothesis जो एक idea concept था that was given in 1931, now that was detected in 1932 around, after 12 years, and for this he got a Nobel Prize. Nobel Prize in Physics 1935. Nobel Prize in Physics in 1935 was given to Chadwick. For what? For the discovery of neutron. Right? So that's what had happened. Clear? So
इस तरह से हमने न्यूक्लियस को थोड़ा सा समझने की कोशिश की। और दूसरी साइड कॉस्मिक रेडिएशन पे लोग काम कर रहे थे, सो आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, राइट। एंड दैट हैज स्टार्टेड सब न्यूक्लियर फिजिक्स, right? So that's all for today's lecture.